acts on a very small time interval, the product co we call as impulse. Large force acting in a very small interval of time. That if you multiply these two, we'll get impulse. Okay, like we play tennis, right? जब बॉल को हिट करने समय बॉल के ऊपर लार्ज फोर्स विल बी एक्टिंग एंड दैट लार्ज फोर्स विल बी देयर इन माइन्यूट टाइम वेरी मिली सेकंड्स में रहेगा. दैट इफ यू मल्टीप्लाई लार्ज फोर्स इनटू द टाइम दैट विल गेट इंपल्स. ओके, सो इंपल्स का वी रिप्रेजेंट एज जे. सम बुक्स में आई से रिप्रेजेंट करेगा, नो प्रॉब्लम. एवरेज फोर्स इनटू टाइम इज कॉल्ड एज इंपल्स. कितना फोर्स एक्टिंग एट ए वेरी स्मॉल इंटर ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंपल्स. एंड impulse force देखो, change in momentum is nothing but impulse only, simple. देखो, we know that F is equal to delta P by delta T, and force into time, I can write like this: force into delta T is nothing but delta P. What is force into time is nothing but impulse only, right? Average large force into very small interval of time. So this is nothing but impulse is equal to change in momentum. So whenever they ask impulse, directly they will not give force and time. वो नहीं, वो गया काम से, वो 9th क्लास का क्वेश्चन. अभी कैसा है, they'll give mass and velocities, you have to find the moment, change in momentum, that is equal to impulse. तो अभी तक जो भी किया conservation of momentum का, change in momentum, we are trying to find change in momentum only. इसमें भी बहुत सारा क्वेश्चंस पूछा है इन मेंस में, बट सम क्वेश्चंस करेंगे, then we'll go for a free bird diagram. Today only we'll start. Okay. So अभी से impulse is nothing but change in momentum or force in time. आया? चलो. Sometimes if the force is variable force दिया है, force is not constant. Okay, like graph they can give like this, ऐसा और ऐसा. देखो, force is variable here in this case में, from time t1 to t2. Suppose I want to find impulse, so क्या करेंगे? How to find impulse? Tell me. We know this formula, right? F equal to dp by dt. From this I can write force dp is equal to force into dt. So मैं क्या कर रहा हूँ, integrate both sides to get momentum, right? So momentum is equal to this is nothing but initial momentum, final momentum लगाए तो क्या होगा? I can substitute this is nothing but change in momentum is equal to integral f into dt. So that means indirectly area under force time graph gives impulse. Integration is nothing but area, right? Area under force and time graph gives change in momentum, that is equal to impulse. Okay. So आपको कैसे लिखने का? You can write like this. देखो, delta t1 to t2 f dt, which we are told f dt का integration t1 to t2 is equal to integral p1 to p2 dp, which is nothing but change in momentum. In this case में t1 to t2 है ना. अगर normal standard वाला दिया तो graph दिया तो just find the area under this t1 to t2 graph. Area of rectangle you can put and solve. So area under force time graph gives impulse or change in momentum. इसी में क्वेश्चंस विल बी रोटेटिंग हियर देयर, वे ऑफ आस्किंग विल बी डिफरेंट, दैट्स इट. So T1 and T2 are limits, and P1 and P2 are also limits. P1 P2 initial momentum, and sometimes they'll tell at T1 में zero momentum, at P2 will be P, he is telling to find momentum at that point. In 3 seconds में ऐसे पूछेगा तो we have to use. So we learned today about impulse. Force into time is called impulse, and force into time is also called as changing momentum. So impulse is equal to changing momentum. And when the force is variable force, or if the given graph force versus time graph, it will tell to find impulse means simply find the area under the graph. Use change momentum. चलो. Now questions करेंगे based on this. आ गया ना फॉर्मूला? चलो.
करना। चलो न्यूमेरिकल्स करेंगे। स्टार्टिंग क्या बोला, इन ए पर्टिकुलर क्रैश टेस्ट ए कार ऑफ मास 1500 kg, ये 1500 kg का कार का, okay, collides with a wall as shown in figure. Initial velocity of the car is मतलब -15 means it is going this direction, right? 15.0 this is second. And final velocity of the car is, hit करने के बाद पीछे आएगा ना, hit करने के बाद पीछे आएगा, so that is 5 meters per second से जा रहा है। Okay, if the collision lasts for this much seconds, एक collision just collision में कितना टाइम लगेगा, 0.0115 seconds तक collision रहेगा। Find the impulse caused by the collision and average force exerted by the car. Impulse आ गया तो average force you can find, right? दोनों 1500 कार सेम कार ओनली, इट इज हिटिंग एंड गोइंग बैक, एंड वेक्टर क्वांटिटी है, आपको डायरेक्शन लगाने का, उस राइट साइड पॉजिटिव लेफ्ट साइड नेगेटिव वाला यूज करो एंड सॉल्व। फर्स्ट इंपल्स कैलकुलेट करो। Are there options or is this numerical? नहीं न्यूमेरिकल ओनली करो। इंपल्स कैलकुलेट करो। इज लिंक टू फाइंड इंपल्स, राइट? इंपल्स का फॉर्मूला इज नथिंग बट चेंज इन मोमेंटम। सो फाइनल मोमेंटम mass into velocity minus initial momentum, mass into initial momentum, initial velocity, and now use karo with sign conventions you have to put. Okay, so initially it is going in the left side direction, right? So I can put m times of m is 1500 kgs, m common arrow, m times of v is how much, -15 minus u is उस तरफ जा रहा है ना पॉजिटिव, so कैलकुलेट कितना आएगा आंसर, m is 1500 Can't kgs। we use VF minus VI because isn't it final minus initial always? हाँ हमारे फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, मतलब सी अगर मैग्नीट्यूड बताया बोलते तो नो प्रॉब्लम, इनिशियल माइनस फाइनल, बिगर माइनस स्मॉलर कर सकते You have to do the root of 15 square plus 5 square, no, right? हैं। इन आई कैप जे कैप लगाएगा। No, sir, without I No, cap but J. both are anyways I cap, right? हाँ So why do you need to do square? हाँ मतलब नहीं वो तो आई कैप है ना, सो नो प्रॉब्लम, ये ऐसे ही करो हो जाएगा। तो चेंज इन मोमेंटम इज हाउ मच, Sir, We got 3 into 10 power 4 I cap. अब कितना है कृष्णा? sir, I got -217500. 2175, भाई किधर क्या मिस्टेक किया? Okay, so one. मास इज 1500, राइट? 1500 into -20, right? Magnitude if I talk no problem, I का magnitude will take, हाँ कितना होगा 3, 13,000 I. हाँ so 3 into 10 power of 4. 300 into 10 power 4 आएगा, हाँ 3 into 10 power 4, So 300 30, into 10 power 2. 3 into 10 power 4. हाँ So shouldn't you divide it by time? इम्पल्स कैलकुलेट कर रहे हैं ना, फोर्स यू कैन डिवाइड बाय टाइम। ओके फोर्स भी कैलकुलेट करो कितना आएगा, so 30 1 2 3, so 3 into 10 power 4 impulse. But isn't impulse, isn't force impulse by time? Force is impulse into time. Sir, impulse divided by delta time. Ah, that is okay. Impulse is equal Because it has to average, right? हाँ no So find for करो, this question, what force average be impulse by delta time? that only impulse by delta t only, that only will get, divide करो कितना आएगा, Sir, that also you'll get in minus. हाँ चलता है माइनस में आने दो, बट अंडरस्टैंड Sir, I got 2 into 10 power. One second. 10 power 5. Let me count the zero. 2 into 10 So power 2 5, into yes 10 power 5. yes correct. Understood? So impulse is nothing but change in momentum का कैलकुलेट करो, हाँ करो।
A body of mass 1 kg falls from a height of 20 meters from the ground level. Okay, ground level से 20 meters के ऊपर से throw किया, drop किया. Okay, what will be the magnitude of total change in momentum of the body before it strikes the ground? A body of mass m falls from a height, so एक building है, 20 meters building है, एक ऑब्जेक्ट है ऑफ मास 1 kg. ये ड्रॉप किया मतलब इनिशियल वेलोसिटी इज 0, so definitely it will fall, right? So it's telling what is the magnitude of total change in moment of the body before it strikes the ground. Just before hitting the ground, what is the change in momentum? मतलब indirectly hit करने के बाद before hitting वाला velocity रहेगा ना, इसका velocity मान लो v. Okay, after hitting नहीं, before, just before hitting वाला v is the maximum velocity, right? At that time, what is So the what change in will velocity? be Change in root 2 momentum. GH? No, values are given, right? Subscribe. Because we already know, right, kinematics में, when you drop an object from a height h, 4 formulas I told you. Before Yes, hitting the ground, under root 2 gh. And initial momentum तो 0 है. sir. 20. 20 units क्या होगा impulse का? Newton per second. Newton into second, in Newton. Yeah, Newton into second. Yes. और F equal ma लगाए तो kg meters per second square into second, मतलब kg meters per second, ऐसा कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट क्या बोला? व्हाट इज द करस्पॉन्ड, ए आ गया आपको कृष्णा? फर्स्ट वन वी गॉट आया कृष्णा, आपको फर्स्ट वन आया? No, sir, I'm still. या व्हाट इज द करस्पॉन्डिंग एवरेज फोर्स एक्सपीरियंस बाय इट? एवरेज फोर्स फाइंड करो. So 10. कितना? 10. टाइम कैसे फाइंड किया? So time I Under got root 2h by g. 2h by g, दैट फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा. 2GH. नहीं, 2gh नहीं है, दिस इज अंडर 2gh वाला वेलोसिटी है. 4 formulas are there. Time taken from the top when you drop an object, कितना टाइम लगा to reach the ground means under 2h by g is a formula. वो याद रखो, बार बार फॉर्मूला शीट में दे दिया ना, वो ऐड करने का, to find time. Otherwise equation of motion लगा के solve करना पड़ेगा. Sir, after you get time, how will you calculate average then? See, force is what? Oh, distance by time. got it. Delta p by delta t. Time, ये फॉर्मूला डिराइव किया ना ऑलरेडी, we did derived Yeah, sir, I got that after that. so under root 2 into 20 by 10 ले लो, so कितना? Two, Under you 4 get- is 2. Subscribe. Delta p is how much you got as initially? 10, 20, yeah? 20 by 2. 20 by 2, yeah. So it is nothing but 10 10 newtons. आया सर? वेल, So थोड़ा what? काइनेमेटिक्स मिक्स करेगा, दैट्स इट, कुछ नहीं. काइनेमेटिक्स वगैरह दैट विल, दैट्स व्हाई वो काइनेमेटिक्स का उधर ही बार बार हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चंस नहीं करने का, आगे आगे करता जाएगा तो सो मेनी काइनेमेटिक्स विल बी कमिंग, सो आपको इजी हो जाएगा काइनेमेटिक्स, लास्ट तक आपको थोड़ा इजी हो जाएगा. ओके, चलो So what's एक the और. unit of impulse? कैलकुलेट द इंपल्स ऑफ दिस फोर्स. इंपल्स फाइंड करेंगे. Sir, is it 1000? नो, आई डोंट नो, करो. Sir, I got 1000. So shouldn't you just find area under the graph? एरिया अंडर ग्राफ फाइंड करने का. 1000. Sir, area under FT graph gives impulse. यस, इंपल्स एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ गिव्स इंपल्स. Yeah, sir. Sir, it's 2000. I mean 1000. देखेंगे, वो लोग भी बोल रहे तो. So and I got 1000. Okay, देखेंगे. The shape you can take as trapezium also, right? कितना है कृष्णा? So it is, आपको क्या मिस्टेक कर रहे हैं? फोर्स
न्यूटन्स एंड मीटर्स मिली सेकेंड। देखो ये वाला मिस्टेक कर रहे हैं आप। टाइम शुड बी आपको Oh, ओके, बट ऑलवेज चेक द ग्राफ। ग्राफ शुड बी मिली है तो कन्वर्ट करना पड़ेगा एग्जाम में। ओके, डोंट गेट कंफ्यूज। सो चेक करो, जो ये तो न्यूटन है, ये मिली सेकेंड से, दैट्स व्हाई 10 पर -3 1000 by 1000 इज 1 न्यूटन सेकेंड आंसर। ओके, चलो। और जेई में क्वेश्चन करने वाला है, करो। ये ऑप्शंस न्यूटन। A bullet of 10 grams leaves the barrel with a gun of velocity this much. If the barrel of the gun is this much centimeters long, उसका कुछ लेना देना नहीं है, and mass of the gun is much, the value of impulse imparted. Normal question. Impulse one means change in momentum find करो, खत्म। So we just do MB minus MB, right? हाँ, impulse change in momentum. But initial momentum always zero, right? We assume gun and bullet is at rest. (2023) means so is it 6? देखेंगे कितना कृष्णा। Sir, हाँ, sir, tell. sir, what do you use delta P for? Like gun or और bullet? देखो किसका दिया है, टेल मी। A bullet of mass. See, impulse of the bullet is equal to the impulse of gun only. Sir, but here the impulse of the bullet is 6 and the gun is 1800. हाँ, वेलोसिटी के हिसाब से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आने के बाद दोनों सेम रहेगा। सो इंपल्स ऑफ बुलेट फाइंड करो, कितना होगा? That is 6. कितना? 6. हाँ, 6। now is that is equal to the impulse of the gun only, same impulse of the gun. See, impulse में कभी भी mass into velocity when you're doing, right? Gun का velocity will be less, right? But mass is same. उसका मोमेंटम, चेंजिंग मोमेंटम विल बी सेम एज दैट ऑफ बुलेट का। बुलेट में क्या है, मास इज कम, वेलोसिटी ज्यादा है। ओके, सो वो दोनों बैलेंस हो जाएगा। सो आंसर इज 6। आया ये वाला? सो आपको क्या करने का, सिंपली इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। इनिशियल मोमेंटम 0 है, जस्ट फाइंड द मोमेंटम ऑफ द गन। आया आपको प्रणव आंसर? तो मोमेंटम कितना होगा, मास इंटू वेलोसिटी, राइट? सो 10 grams मतलब 10 into 10 power of -2 into the milliseconds 610 power -3 किया तो विल गेट आंसर एज 6। आया प्रणव? यू देयर? इज नॉट देयर।
Sorry, sir. Sorry, sir. Some illustration has come Yes, wrong. sir. हाँ, you got answer? No, sir. मरी देखो, मरी ऑन करके देखो. Impulse is telling to find, right? Impulse is supplied by the gun. Gun कितना impulse किया? So Sir, why is the initial impulse 0? initial में always gun and bullet is at rest. Okay, initial always gun and bullet में. So initial momentum will be 0 always. So, So sir, why did they give the length of the barrel? वो time pass के लिए दिया. To get confused. Okay. So final momentum will be mass into velocity. Gun का find करो. Mass is 10 grams, right? 10 into 10 power minus 3 into velocity. Velocity is how much? Gun parallel with the velocity of 600, right? Milliseconds. 10 power minus 3. And mass of the gun, इसका velocity नहीं दिया ना, that's why we are trying to find bullet का. So कितना होगा? 10 power of minus 2, 10 power of minus 5, 600 into 10 power of minus 5. Right? Minus 2, minus 5. So 6 into 10 power of minus 3. Okay. Now this is nothing but milliseconds, Newton second, right? Now कितना होगा? This and this are same, right? So आंसर कितना है आपको, प्रणव? So, sir, once you find the impulse of bullet, impulse of bullet is equal to impulse of gun. Impulse of bullet is always equal to impulse of gun. ये वाला आपको 600 milliseconds नहीं है, meters per second है. That's why आंसर रॉन्ग है. और आप बोलने का सब लोग milliseconds में करके आंसर कैसे आ रहा है उसका? So this is this much. Where it said velocity, sir. Oh no. Okay, but milliseconds बोल के मैं देख रहा हूँ. So कितना होगा? 6 in mass into velocity, right? So 10 to the power minus 2 into 600. So it is 6 Newton second. आया? चल next one करो. Sir, muzzle speed in the sense velocity of bullet. What? Sir, muzzle speed is velocity of bullet. So 0.2. 0.2 देखेंगे. मतलब दोनों which option? ऐसा 0.1 bullet- and 0.05. देखेंगे. A bullet of mass is fired from the gun. If the bullet moves with a muzzle velocity this much, the impulse imparted to the gun and the velocity of the recoil. Easy on that. Find करो. Impulse is nothing but change in momentum. So bullet का मास दिया है, गन का मास दिया है. बुलेट का वेलोसिटी इज गिवन बट गन बुलेट का मास इज नॉट गिवन, राइट? सो पहले वो फाइंड करो, बुलेट का मास फाइंड करो बाय यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. So bullet mass they get 4, right? बुलेट का मास दिया है बट इसका सब कुछ दे दिया. गन का मास आल्सो गिवन, बुलेट का वेलोसिटी इज गिवन, गन का वेलोसिटी फाइंड करो Sir, one second. बाय यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. I got 0.05. Yeah, I got 0.05 दोनों ऑप्शन में. no. B. हाँ, B is आंसर. Sir, you get it in terms of G now.
In terms of g, Sir, you get velocity in terms of g, and then what do you do? velocity in terms of g नहीं है, g किधर सर है? Apply conservation of momentum to get velocity. Tell me, conservation of Oh, momentum क्या that's है? 4 gram. Okay, no, sorry. हाँ हमारे Sir, I thought it was 4g. हाँ 4g वो हो Thought it was a variable. 4 into 10 power minus 3. Yes, sir. ये कितना है? ऑप्शन बी है. Yes, And sir. after getting the velocity of the gun, impulse imparted of the gun means you can know change in momentum, right? Final momentum minus initial momentum कहता आ जाएगा, right? चलो. Now types of forces. Now we are entering into the these all diagrams वगैरह में enter हो रहे हैं धीरे धीरे. Types of forces. You know different types of forces. What are different types of forces? Tell me. What are Sir, different? balance and imbalance. कौन सा? Balance and imbalance. हाँ नहीं, वो 9th class का है. Contact, non-contact. हाँ, contact forces and non-contact forces. Okay. Now, non-contact forces में what are things are there? Gravitational force, electrostatic force, and magnetic force. I told that non-contact means two bodies are not in contact. उन दोनों के ऊपर force लग रहा है. That force is nothing but non-contact force. In this way, we are studying this one, gravitational force, and these two we will studying in 12th class. Okay. Similarly, what is the contact forces में क्या क्या है? Tension force, normal reaction force, spring force, and friction force. Friction force is separate chapter only, separate deal करेंगे separately. But ये वो तीनों में आज deal करने वाले. This one and this one, gravitational force. ये लिखो, first लिखो. So didn't we already write this? Starting में different लिखा, but अभी free body diagrams करने वाले इसके बेस में. Starting में लिखा, we wrote. Directly I'll just write free body diagram as heading. Yeah. Okay. Okay. Now we'll study gravitational force क्या है पूरा gravitational force वगैरह. We'll study detailedly in this gravitation chapter. Okay. So first one we will go for a non-contact force, which is weight. What is meaning of weight means? Weight क्या है? mg. Okay, but what is the definition of weight? The force acting by Earth on a person. Yes. देखो, a force with which Earth attracts an object. कितना body को खींच रहे, attract कर रहे, that is a weight. And weight का formula है mg and SI unit is Newton. Weight का SI unit is Newton. Okay. So देखो, Earth है, Earth इसको कितना पुल कर रहा है, that is mg force, right? That is weight. That's why एक एक planet में एक एक weight होगा. Like moon में अलग weight है, Earth में अलग weight है. Moon में 1/6, right? इसमें अलग है. Because mg is changing, right? That's why the weight of the person will change. And similarly, action reaction के पेयर के हिसाब से this body also will attract the Earth with the same force, mg force. Okay, this is a weight. And आपको याद रखना पड़ेगा one thing, weight always acts toward the center of the Earth. Weight always acts toward the center. Okay, याद रखो. लिखते जाओ. मानो, write down first. So I wrote, sir, already very easy. Okay. Sure. Sir, weight acts perpendicular to the object. No, weight always acts towards the center of the Earth, but perpendicular नहीं है, ऐसा नहीं है. देखो some angle में भी आएगा. We'll draw now. Okay. चलो, some examples ले लेंगे. Okay, tell me. इसका weight draw करो.
जस्ट शो द वेट. दिस इज एक ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर वेट कितना है, सिंपली mg फोर्स, राइट, डाउनवर्ड्स mg फोर्स. ओके, नाउ इसका इसका ड्रॉ करके देखो. इज इंक्लाइन प्लेन, इज इंक्लाइन प्लेन थीटा, दिस इज मास m. इसका ड्रॉ करो, वेट किस तरफ है, शो में. So it'll be acting down on the body. डाउनवर्ड्स ओनली, बट परपेंडिकुलर सरफेस से. No, sir. सो वेट ऑलवेज एक्ट्स डाउनवर्ड्स टुवर्ड्स सेंटर ओनली, बट नॉट ऐसा नहीं कि परपेंडिकुलर रहेगा बोल के. ओके ओके, नाउ इंक्लाइंड प्लेन में दिस इंक्लाइंड प्लेन एंगल थीटा है. यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग. ओके, सो सपोज मान लो this direction I am taking as x direction and this direction I am taking as y direction. Okay, x direction. Now if you see carefully, I want to resolve the components mg ka components along x and y. I want to resolve the components along x and y. Okay, so we'll do some geometry. देखो, this is 90, this is theta, this will be how much, 90 minus theta. 90 minus theta. Okay, and this is perpendicular, Theta. so this is theta. Now mg का इस तरफ component will be mg cos theta, Yes, sir. and ये पॉजिटिव डायरेक्शन इधर ले लो, हो जाएगा. तो दैट टाइम नेगेटिव नहीं आएगा, आपको इस डायरेक्शन टेक एज पॉजिटिव. ओके, नाउ mg का इस तरफ कंपोनेंट इज mg sin थीटा, और करेक्ट लाइक दिस, इसके ऊपर mg sin थीटा. ओके, दैट मींस आपको याद रखो ऑलवेज व्हेनेवर weight is there in the inclined plane, don't take again mg, ऐसा मत ले लो. ऑलवेज यू हैव टू रिमेंबर इस तरफ लो mg cos थीटा, mg sin थीटा, ऑलवेज ऐसे लेने का. ओके, ऑलवेज डोंट टेक अगेन mg कंपोनेंट्स निकाल के फिर से नहीं लेने का. mg cos थीटा, mg sin थीटा, ऐसा है तो भी नो प्रॉब्लम. एनी डायरेक्शन, दिस डायरेक्शन आल्सो. m है तो ऐसा क्या होगा, दिस थीटा है तो आपको क्या है, इस तरफ वाला क्या है, mg Sin theta. sin थीटा, एंड ये वाला mg cos Cos थीटा. theta. तो आपको क्वेश्चंस करने टाइम में वगैरह में डायरेक्ट लेने का mg का कंपोनेंट्स निकालने का. डोंट टेक अगेन mg इन दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स में. ओके, इज अ नॉन कांटेक्ट फोर्स डन mg के बारे में. ओके, ये सब डायग्राम ड्रॉ करना सीखे तो आगे का फ्री बॉडी डायग्राम लर्न करेंगे. ओके, नेक्स्ट विल गो फॉर ए कांटेक्ट फोर्सेस. कांटेक्ट फोर्स में फर्स्ट वन वी आर स्टडीइंग अबाउट नॉर्मल एक्शन फोर्स. एंड यू नो नॉर्मल एक्शन फोर्स कैसे लगाने का. नॉर्मल मींस नथिंग बट व्हाट, perpendicular. Normal is perpendicular, right? So this force will act only when two surfaces are in contact. So this normal action will be acting only when two surfaces are in contact, and that force is always perpendicular to surface or point of contact. Surface से perpendicular रहेगा always. Okay, suppose मान लो like this is here, I told you the normal action कैसे रहेगा, it is always perpendicular to surface. Perpendicular to surface is normal action. Okay, why we are putting normal action upwards, I told you on that day that weight एक ही act हुआ तो the book will be going towards the center of the earth, but book is not going towards the center of the earth. But that means one more force is acting in the opposite direction, which is balancing the weight. That is nothing but normal action. The normal action should be always perpendicular to surface. ओके, ना नॉर्मल एक्शन ड्रॉ करो. सपोज मान लो, ठीक है, सब एग्जांपल्स देखेंगे नॉर्मल एक्शन ड्रॉ करके दिखाने का, राइट. सपोज So can you go back for a second? Oh, okay. okay, Yes. Once. Yeah, done. चलो नाउ ड्रॉ करो. सपोज
there is a this is a support ऐसा है, इसके ऊपर there is one ladder leaning on the wall. Okay, now normal action draw करो, normal action draw करो. Sir, for the ladder. ladder का. So draw the free body diagram of this. No need, not till now not introduced free body diagram. Ladder का just normal action दिखाओ draw करके. हो गया आपका क्वेश्चन? हाँ मानो क्या सर्च कर रहे No, sir, I wrote this. या ड्रॉ कर दिखाओ मरी दिखाओ इसका प्री मरी लिखो नोट्स अच्छे से बनाओ. नॉर्मल एक्शन कैसे ड्रॉ किया? नो इज नॉट नॉर्मल एक्शन रॉन्ग. आप दिखाओ Sir, आप भी ऐसे me- ड्रॉ कर रहे हैं. हाँ Sir, I didn't draw MG. एमजी नहीं है. ओके नहीं ऐसा मत करो. सी देखो नॉर्मल एक्शन ये किधर लगा रहे हैं वो उसको ऊपर क्या फोर्स एक्ट हो रहा है दैट वन इज शो में. ओके देखो see normal reaction will be whenever there is a two bodies are in contact we are applying a normal action, right? Whenever two bodies are in contact देखो किधर किधर कांटेक्ट हो रहा है, इधर कांटेक्ट हो रहा है, इधर कांटेक्ट हो रहा है. ओके सो आपको डायग्राम ड्रॉ करेंगे. देखो the surface will exert a normal action on the ladder in this direction n1 and the ladder will exert a normal action on the wall is n1, right? Action reaction pair. So always surface is exerting a normal action on the ladder should be this direction, not this direction. Okay, दूसरा same way surface is exerting a normal action on the ladder like this. I should call this as N2. Why? Different contact will have different normal reactions. लिखो पॉइंट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आपको फ्री बॉडी डायग्राम मिस्टेक्स होगा. डिफरेंट कॉन्टैक्ट विल हैव डिफरेंट नॉर्मल रिएक्शन. So what was the point again? Different contacts will have different normal reactions. देखो surface is exerting a normal reaction on the ladder N2 and the ladder will exert a normal reaction in this N2 action reaction. That's why N1 नहीं लगाया N2 लगाया because दोनों different contacts है. Because इस surface में maybe more different normal reaction भी different force है ना. That's why N1 N2 लगा. Okay now लगा now करो. This is a surface. Here मान लो आपको एक sphere is there. नो ड्रॉ करके देखो. नॉर्मल एक्शन ड्रॉ करके देखो. whenever two bodies are in contact उसी में नॉर्मल एक्शन आएगा. Sir, it's touching at the tip. हाँ टिप में टच कर रहा है. Okay. So now I have to draw normal for the that normal diagram. action for this. How many normal actions will coming? 2. हाँ देखो नजदीक दिखाओ थोड़ा. No wrong. No wrong. Sir, inside only no, sir. देखेंगे थोड़ा रॉन्ग है. I'll tell you. ये सब कुछ आए तो क्वेश्चंस आपको थोड़ा इजीली सॉल्व होगा. थोड़ा नहीं तो सब मिस्टेक्स हो जाएगी. Sir, it should be perpendicular to the vertex or whatever the thing is. No. देखेंगे. सेंटर है वो. So it will be like this. Which one? कुछ दिखाए. अरे अच्छे से दिखा. एक रुको स्टेबल रखो. थोड़ा रंग है. थोड़ा रंग है. थोड़ा रंग है. Sir, should it touch the center or something? ओके हाँ देखो थोड़ा मिस्टेक क्या होगा मालूम है.
देखो ये कांटेक्ट है ना, ये क्या होगा, स्पीयर में कभी भी याद रखो, नॉर्मल रिएक्शन ऑलवेज पासेस थ्रू सेंटर ओनली, ऑलवेज पासेस थ्रू सेंटर. ओके, सो नॉर्मल रिएक्शन इसका क्या होगा, दिस सरफेस इज एक्सर्टिंग नॉर्मल रिएक्शन ऑन द स्पीयर like this n1, and the sphere will exert normal action n2. Okay, देखो नॉर्मल रिएक्शन ऑलवेज पासेस थ्रू सेंटर. आप थोड़ा ऊपर कर रहे हैं ना, ऊपर वाला नहीं, सेंटर से पास होने का. ओके, एंड ये वाला क्या होगा दिल में, Step सरफेस is इज, हाँ. if the thing is too big and the step is like too high नहीं नहीं, and वो प्री बॉडी डायग्राम में वो सब कुछ छोटा हो जाएगा. ये इसमें तो ऐसा लग रहा है प्री बॉडी डायग्राम में ऐसा होगा. देखो इसमें देखो, टिप ऐसा है ना. सो दिस इज एक्सर्टिंग नॉर्मल एक्शन ऑन दिस n2, एंड सिमिलरली ये वाला n2. ओके, सो याद रखो, लिखो द नॉर्मल एक्शन फॉर ए स्पीयर ऑलवेज पासेस थ्रू सेंटर, सेंटर से पास होने का. Sir, why is N1 acting in between the two surfaces? N1 acting in it. देखो wherever contact is there, then no normal action will be coming, right? So contact is here between, Yeah. so contact sphere and this one, right? And the surface is exerting a normal action on the sphere that should passes through center always. So centers का apply कर रहा है, and reaction force will be in opposite direction. Okay, sir. Okay, next one. हो गया, normal action हो गया. Next, हाँ इसका ड्रा करो. हाँ देखो इसका नॉर्मल एक्शन ड्रा करके. We already draw the first one just now. हाँ, बट नॉर्मल एक्शन ड्रा करो, mg रखे ना. So won't it just be mg cos theta? ये It is- क्वेश्चन है, he's asking normal reaction only, not should we mg. draw MG also? हाँ ठीक है, ड्रा कर, तो इधर ड्रा कर, इसका ड्रा कर लो mg का. So they didn't ask me. अमर इज दैट, आई डोंट नो यू आर टेलिंग. I don't know. Sir. ओके, नॉर्मल एक्शन एक ही ड्रा करो, दैट्स इट. अगर mg का ड्रा कर तो आपको सिंपली mg sin थीटा mg cos थीटा डायरेक्ट डाल देने का, शुड नॉट पुट mg अभी से. along the incline always sin theta आएगा, mg sin theta. Yeah, sir. Won't we get a normal on the right as mg sin theta? Wait 1 second, I'll draw. Only normal action ड्रा करो, that's it. We will be like this for the first one. अरे surface is exerting a normal action. See, I want to draw the normal action on the for the block, block के ऊपर, block दूसरा ऑब्जेक्ट के ऊपर नहीं लगाने का. मुझे चाहिए एक्शन दोनों ड्रॉ करो, एक्शन रिएक्शन ड्रॉ करो. सो देखो, surface is exerting a normal action on the block like this n1, and the block will exert normal action because perpendicular, right? Like this n2, n1 is a normal action done. Draw both, sir. हाँ, They shouldn't we like only draw for the object and नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है. देखो फ्री बॉडी डायग्राम में द फोर्स एक्टिंग ऑन इट, बट आपको प्रॉब्लम, ये रिएक्शन फोर्स प्रॉब्लम किधर आएगा मालूम है, अगर ये लर्न नहीं किया तो आपको आई विल गिव लाइक दिस, दिस इज ब्लॉक ए, दिस इज ब्लॉक बी, देन आपको इधर प्रॉब्लम होगा. देखो ये दिस इज एक्सर्टिंग ए नॉर्मल एक्शन ऑन द ब्लॉक बी n1, एंड दिस आल्सो विल एक्सर्ट नॉर्मल एक्शन ऑन दिस n1. ये भूल जाएगा, उधर आंसर नहीं आएगा, रॉन्ग, पूरा रॉन्ग हो जाएगा. आपको एक्शन रिएक्शन सीखो पहले, देन वी विल सी कैसे कंबाइन करेंगे बोल के. ओके, दिस एक्शन फोर्स एंड रिएक्शन फोर्स, ये दोनों डालना करा. 3 ब्लॉक्स है तो बहुत कंफ्यूज होगा बाद में ऐसा. ओके, चलो इसका ड्रा करो नॉर्मल एक्शन. एंड यू नो स्पीयर, स्पीयर का ऑलरेडी वी ड्रू, राइट? कैसे आएगा, पासिंग थ्रू सेंटर n1, एंड दिस इज n2. different contact will have different, so इसका will be n1, इसका will be n2. okay, इसका कैसा रहेगा, दोनों कांटेक्ट है ना, ड्रा करके देखो इसका थर्ड वन.
Oh, sir, why will the N1 and N1 be the same? N1 N2, see action For reaction. the block, not the circle, the first one. This one, huh? Yeah. Why not same? The surface is exerting a normal reaction N1 on the block. At the same instant, the block also will exert normal reaction on the block N1. Dono same opposite reaction. That's Newton's third law we deal initially. Okay. Yeah. So for the third one also won't be the same. This will applying a normal action on this. Yeah, that side has N1 and that side also has N1 only. Okay. I say right. Aya, Krishna. Yes. क्या केमिस्ट्री एग्जाम है क्या पढ़ रहे हैं क्या समथिंग सोच रहे हैं हाँ या चलो हाँ इसका ड्रॉ करो देखो अभी इसका ड्रॉ करो देखते हैं मुझे जस्ट नॉर्मल एक्शन वेट का ड्रॉ करके दिखाओ नॉर्मल एक्शन वेट इन दिस डायग्राम में देखो Both of them separately or all of them together? all of them together only. Sir, in that one figure. बड़ा ड्रॉ कर लो if you want. वहां से हम and this is small m. देखो I will draw. First of all देखो ये दोनों contact है ना. Whenever there is a contact between two bodies, there is normal action, right? This is exerting a normal action N1 on M, and M will apply a normal action on N1. देखो action reaction पे N1 आ गया. Now since ये ground है, so ये नॉर्मल एक्शन दिस ये दोनों कांटेक्ट है ना सो ये नॉर्मल एक्शन लगा रहा है इसके ऊपर सरफेस इज एक्सर्टिंग नॉर्मल एक्शन ऑन द ब्लॉक सेकंड ब्लॉक दैट इज N2 डिफरेंट कांटेक्ट विल हैव डिफरेंट नॉर्मल एक्शन एंड ये अप्लाई कर रहे हैं N2 एंड Mg का यू नो Mg हियर Mg एंड हियर Mg राइट डाउनवर्ड से ना टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द अर्थ के डायरेक्शन में जाएगा ओके Shouldn't it be capital M plus small m into G? हाँ टोटल अगर कितना फोर्स लग रहा है इसके ऊपर मीन्स कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इनटू जी यस दोनों So then shouldn't we write that? yeah you can write but individually we are showing right that's why we are putting this one but totally we can if you want totally you can combine and 2 mg रहेगा but you tell me mg is acting on capital M also or not this small mg is acting on M or not anybody Pranav Mano Sir, no, sir, the normal force will remove it. ऐसा कुछ नहीं है नॉर्मल फोर्स का संबंध नहीं है अरे तो सभी में नॉर्मल एक्शन वेट कर नहीं डालेगा कैंसिल हो Normal force will balance it. Like, जाएगा नहीं रॉन्ग टेल मी प्रणव whether mg force small mg force is acting on this capital M because we are studying free body diagram at that time आपको ड्रॉ करने समय कौन सा फोर्स एक्टिंग ऑन M कैपिटल M Sir, ये फोर्स इसके ऊपर एक्ट होगा ना नहीं होगा yes, the capital Mg will act on small mg also. स्मॉल mg I'm telling small mg is acting on capital mg Yeah. आप मानो Yeah, sir, on the M1 block, I got capital N1 in the top and N2 on the and Mg on the bottom, and for M2 I got same as N1 on the top and M2G on the bottom. क्वेश्चन वो सब नहीं है क्वेश्चन क्या बोल रहा हूँ स्मॉल mg is acting on capital M not Yeah. Krishna? Small mg, no. हाँ Oh, yeah. Small mg, yeah. okay Krishna final answer is small mg will act on capital M or not answer is no small mg will not act on this one in free body diagram में we are not putting the small mg for the capital M So why then because why not वो make it downwards? Then directly we can just make it drawn to the ground, right? देखो वो सब अंडरस्टैंड करो आपको ग्रेविटेशनल फोर्स है नॉन कांटेक्ट फोर्स है सभी ऑब्जेक्ट्स के ऊपर उसका रेस्पेक्टिव ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी एक्टिंग बट दैट ग्रेविटेशनल फोर्स वी शुड नॉट पुट ऑन दिस कैपिटल M ओके स्मॉल mg दैट्स व्हाई फ्री बॉडी डायग्राम में ये निकाल देने का उसके ऊपर
जो भी फोर्स एक्ट कर रहा है, किसका ग्रेविटेशनल फोर्स उसका ही डालने का। समझ में आ रहा है? Okay, sir. इसका ड्रॉ करो। Sir, I have a doubt. होटल में So, sir, if both the blocks are at rest, so N2 will be equal to capital mg, right? सी ऑब्जेक्ट इज रेस्ट ओनली, इट इज नॉट मूविंग अपवर्ड्स, राइट? ऑब्जेक्ट रेस्ट है तो आपको n2 इज इक्वल टू Capital mg. कैपिटल mg, यू टेलिंग? Yeah. नो, वाई? बिकॉज आपको ये इसमें n1 भी ऐड करना पड़ेगा। n1 तो एक्ट होगा ना इसके ऊपर, सो अकॉर्डिंग टू यू n2 इज इक्वल टू n1 प्लस कैपिटल mg। ओके, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन इट, विल सी इन फ्री बॉडी डायग्राम, बट समझ में आ रहा है? बस डायग्राम्स ड्रॉ करो, फोर्सेस क्या क्या फोर्स एक्टिंग ऑन इट, दैट वन विल सी। अंडरस्टैंडिंग? इसका ड्रॉ करो। Sir, for the first one, shouldn't we also draw force? फोर्स क्या? फोर्स, ठीक है, बट वी आर ड्राइंग वर्टिकल इक्विलिब्रियम में वी आर सीइंग। ओके, नेक्स्ट, So for because the normal reaction and weight only, right? That's why no need of force. won't there be N1 on the top of M1G and M1G in the bottom and M2G in the bottom of M2 and N2 on top? Which one? This one you're telling, Yeah. इसमें क्या है? आपको नॉर्मल रिएक्शन किस तरफ फैक्ट होगा? ऊपर. हाँ, ओके, ये इसका Sir, sideways, no? मतलब So but can it be up because it's perpendicular, right? देखो, ये वाला हो गया, ठीक है, ये वाला तो ऊपर आ गया दोनों, n1 n2। Yeah. ओके, इसका बोलो साइड वाला नहीं है। Whenever two bodies are in contact in sides also, right? Whenever Oh, two yeah, bodies yeah, are in yeah, contact, yeah, that is also. important. So this is exerting a normal reaction n1, and this also exerts a normal reaction on this n2. And weight तो मालूम है आपको, m1g, So and this is you m2. don't need to draw for upper. Up also you can draw. This is n3, Okay. n4. So that's why I asked. Other than that, Generally हम लोग when the objects start moving, we should take always horizontal one. We generally will take, but no problem. All will learn करेंगे. Then only it will get. Okay? समझ रहे? थोड़ा हम लोग आगे जानेंगे। ओके, चलो नेक्स्ट, टेंशन फोर्स। एबीसी को टेंशन फोर्स क्या? टेल में व्हेन विल बी दिस टेंशन फोर्स विल एक्ट? व्हेनेवर देयर इज ए String. रिंग, चेन, ऐसा रॉड वगैरह, तो विल यूज द टेंशन फोर्स। सो व्हेनेवर देयर इज अ स्ट्रिंग, रॉड, चेन, वी यूज टेंशन फोर्स। एंड देखो, द पर्सन इज पुलिंग द ब्लॉक। ओके, द टेंशन फोर्स, टेंशन एक्ट होगा रूप में। देखो, ब्लॉक है, मैं सब पुल कर रहा हूं, द टेंशन फोर्स विल बी एक्टिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, राइट? टेंशन फोर्स। सो मैन के रेस्पेक्ट में द टेंशन फोर्स विल बी लाइक दिस, टी, एंड दिस ब्लॉक के रेस्पेक्ट में द टेंशन फोर्स इज टी। सो टेंशन इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द पॉइंट, ऑलवेज, और टेंशन इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट यू आर सीइंग, उसका अवे रहेगा ऑलवेज। ये पर्सन पुल कर रहे हैं, टेंशन विल बी अवे। Okay, so direction is, tension direction is always away from a point of contact. Because tension direction is always away from a point of contact. Okay. Okay. No. Some examples लो, इसके टेंशन ड्रा करो। हाँ, Always away from. Yeah, sir, away done, from done. point of contact. Okay, इसका टेंशन फोर्स लगा रहा हूँ मैं, खींच रहा हूँ ना, टेंशन फोर्स क्या है? टी। अवे, मैन के रेस्पेक्ट में टी, ब्लॉक के रेस्पेक्ट में टी विल बी लाइक दिस, राइट? ओके, इसका बोलो, इसके रेस्पेक्ट में, शिप के दैट स्केट्स के रेस्पेक्ट में टेंशन इज टी, एंड इसके रेस्पेक्ट में टेंशन इज टी, Three. राइट? ओके, नाउ Sir, why will the other T act in the opposite direction? टेंशन आप ही सोचो, रोप को मैं खींच रहा हूँ, मैं खींचता गया, द टेंशन विल बी एक्टिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑलवेज। टूट गया तो हम लोग पीछे जाएगा, गिर जाएगा, राइट?
तो टेंशन इज ऑलवेज एक्टिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. वो ब्लॉक है ना, ब्लॉक का खींच लेना, ऐसा खींचा जा रहा है ना, तो टेंशन ऑलवेज अवे फ्रॉम द पॉइंट रहेगा. नॉर्मल लाइव एग्जांपल से बॉक्स को खींच रहे तो द रोप के ऊपर टेंशन विल बी ऑलवेज, नहीं तो कभी भी ब्रेक होने समय ऐसे ऐसे जाएगा. एंड व्हेन यू ब्रेक हो जाएगा ना, रोप विल बी झूम बोल के जाएगा उस तरफ. टेंशन विल बी ऑलवेज एक्टिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. ओके, अब देखो इसका टेंशन फोर्स ड्रॉ करो. और वेरेवर स्ट्रिंग इज देयर, टेंशन ड्रॉ करने का. ड्रॉ करो. So only tension. हाँ, ओनली टेंशन. ये पुल्ली है ना, पुल्ली का मालूम है ना, पुल्ली व्हील्स आर देयर एंड रोप, व्हेन द रोप इज रोटेटिंग द पुल्ली आल्सो रोटेट्स. Sir, and the tensions also will be in a pair, no? Tension also in a pair में, but no need of putting the pairs in this way. Tension is always away from the point. Okay. Sir, but then if you're doing like between B and C, then it will have to be T1 and T1 only, no? हाँ, वो बोलता हूँ, करो, बोलने वाला ट्राई करो. नेक्स्ट में जरूर ले. देखो Sir, won't इसका that be just tension down and won't the tension on B on A be the same? टेल में इसका क्या लगा? T1. ऑलवेज ब्लॉक के रेस्पेक्ट में वी आर सीइंग, राइट? हाँ, दिस इज T1 ना, राइट? हाँ, इधर ये सेम स्ट्रिंग है ना, इधर क्या आएगा ब्लॉक के रेस्पेक्ट में? T1. T1. इधर ब्लॉक के रेस्पेक्ट में T1 plus mg. T1. T1 Sir, plus why mg. would it be T1, sir? हाँ, that all. अरे रुको, उनको So बोले always बोलो. T1 plus mass of B into G. हाँ, something they are telling, right? Let them tell. बाद में बोलूंगा. Okay, see, what is the thing is, always याद रखो, different strings, different tensions. Different strings, different tension. देखो इधर से इधर तक सेम स्ट्रिंग है, दैट्स पे सेम टेंशन लगा रहा हूँ, बट ये टेंशन ये रोप डिफरेंट है, सो टेंशन विल बी डिफरेंट. सो आपको क्या लगाने का, इधर T2 लगाने का, एंड इसके रिस्पेक्ट में इट इज T2. देखो सेम स्ट्रिंग सेम टेंशन, दैट्स व्हाई देखो सेम स्ट्रिंग सेम टेंशन, डिफरेंट स्ट्रिंग डिफरेंट टेंशन. सो आपको T1 T2 लाइक नॉर्मल एक्शन कैसे क्या, डिफरेंट कॉन्टैक्ट विल हैव डिफरेंट नॉर्मल एक्शन, राइट? सो डिफरेंट स्ट्रिंग्स विल हैव डिफरेंट टेंशंस. सो देयरफॉर आपको लर्न करना पड़ेगा, व्हेनेवर स्ट्रिंग चेंजेस टेंशन आल्सो चेंजेस. देखो, व्हेन स्ट्रिंग चेंजेस टेंशन चेंजेस. Okay. ओके, सो ये नॉन कांटेक्ट फोर्स भी हो गया, कांटेक्ट फोर्स भी हो गया. हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम्स एंड इक्विलिब्रियम टाइप ऑफ क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट क्लास में करने वाला है पूरा.